Hello friend, now welcome back to my channel Learning Adda. In this video, we will discuss class 8 RS Agrawal chapter 8 linear equation, question number 21 and 22, 23. Let's first start question number 21. Divide 150 into 3 parts such that the second part is 5, 6. The first and third is 4th, 5th of the second. Start the solution of question number 21. Given that क्वेश्चन में क्या बना है कि 150 को में डिवाइड करना है. टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 150. क्वेश्चन में गिवन है कि 150 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. लेट द फर्स्ट पार्ट equals to x and second part equals to 5th upon 6 of first, means x का 5th upon 6, 5 upon 6 x, and third part equals to 4 upon 5th of second part, and second part will be 5 upon 6x. When we simplify these terms, 4 upon 5 into 5 upon 6 x, 5 and 5 cancel हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 just 6, means third part is 2 upon 3 x. Now according to question, sum of these 3 parts equals to 150. First part x and second part 5 upon 6x, means 5x upon 6, and third part is 2x upon 3 equals to 150. LCM लेंगे, 6 है, 6 multiplied by x, 6x plus 5x plus 3, 6 divided by 3 we get 2, and 2 multiplied by 2 is 4x equals to 150. 6 and 4 10, 10 and 5 15x upon 6 equals to 150. X equals to 150 upon 15 into 6. 15 10 x equals to 60, means first part equals to 60. Then we find second part and third part. This is first part, second part equals to 5 upon 6 into 60, means second part is 50, and third part 2 upon 3 x equals to 60, 3 to the 6, means third part is 40. Now next question number 22. Divide 4500 into 2 parts such that 5% of the first part is equal to 10% of the second part. Let's start the solution of question number 22. Let the first part equals to x. फर्स्ट पार्ट को हमने x लेट किया है. सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट 4500 है, तो उसमें से फर्स्ट पार्ट को जब माइनस कर देंगे तो सेकेंड पार्ट हमारा आ जाएगा. 4500 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट का 5% ऑफ फर्स्ट पार्ट equals to 10% of second part. When we simplify this equation,
and find the value of x. Five upon 100 x equals to 10 upon 100. परसेंटेज को रिप्लेस करेंगे डिवाइड बाई 100. 4500 माइनस एक्स. 0 कैंसिल आउट. 5 1 5, 5 2 10 and 0 means x upon 20 equals to 4500 minus x upon 10. When we cross multiply, 10 multiply by x, 10x equals to 20 multiply by 4500. 45 into 2 90 and 000 minus 20x. 10x 20x शिफ्ट करेंगे इधर, प्लस 20x इक्वल्स टू 90,000. 30x इक्वल्स टू 90,000. x इक्वल्स टू 90,000 अपॉन 30. 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3000 आएगा. मीन्स x इक्वल्स टू 3000. x हमने क्या लेट किया था? फर्स्ट पार्ट. मीन्स ये फर्स्ट पार्ट हो गया. फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 3000 एंड सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 4500 माइनस 3000. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. 1500 हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा. Now come to next question. Question number 23. Rakhi's mother is 4 times as old as Rakhi. After 5 years, her mother will be 3 times as old as she will be then. Find their present ages. Start the solution of question number 23. Solution of question number 23. Let the age of Rakhi equals to x and Rakhi's mother age 4 times of Rakhi age. 4 multiply by x यानी 4x. आफ्टर 5 ईयर राखी एज. 5 ईयर के बाद 5 ऐड कर लेंगे. x प्लस 5 ऑफ राखी एज एंड मदर एज इक्वल्स टू 4x प्लस 5. पहले मदर की एज 4x थी तो उसमें भी 5 ऐड करेंगे. 4x प्लस 5 हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 3x plus 5 equals to 4x plus 5. 3 multiply by x, 3x plus 15 equals to 4x plus 5. 4x minus 3x equals to 15 minus 5. 10 equals to x. Means x equals to 10. Age of Rakhi. Age of Rakhi equals to 10 years and mother age equals to 4x. Means 4 into 10 equals to 40 years.